Hello everyone, I'm Neha from ixamBee. Today in this video, I'll be discussing about CLAT UG 2021, what to study for the legal reasoning section. The very first question which comes to our mind is, where do I start? So, we need to start smart, which means that we should set up a specific goal which should be measurable, achievable, and relevant to the subject matter or topic of the exam. And all this we have to do within a time frame. So इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे लीगल रीजनिंग सेक्शन का मतलब क्या है. This legal reasoning section is actually not going to judge the students' knowledge of law, but it is going to test their reasoning of law, as reasoning questions are based on law, which forms a part of this legal reasoning section. So, the very objective of this exam is to judge the candidate's legal and research aptitude, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक पैसेज को रीड करेंगे, उसमें दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को समझेंगे, देन उस प्रिंसिपल ऑफ लॉ को वो अप्लाई करेंगे जो भी फैक्चुअल सिचुएशंस क्वेश्चंस में दिए गए होंगे. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज द good command on comprehension and reading skill, as the questions in the exams are passage based. The students should have a good command for the reading and comprehension skill. If we look at the pattern of the questions in the exam, हम ये देखेंगे कि 7 to 8 passages जो है around 450 words के एग्जाम में आते हैं, और इन सभी passages में से 4 to 5 questions पूछे जाते हैं. ये सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल सिचुएशंस और सिनेरियोज को रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी, एक्सेट्रा. Very important point to be noted over here is that CLAT mentions that no prior knowledge of law is required, but at the same time it mentions that students should be having a general awareness of all the contemporary and moral legal issues. So we need to be updated. Some of the relevant topics on which the passages may be based in the exam are fundamental rights, contract, defamation, nuisance, culpable homicide, murder, negligence, cheating, assault, etc. Apart from this, legal language and maxims, this form a very important part of the exam, as the questions are passage based. Then the legal issues current to static of past 6 months to 1 year, as well as the landmark judgments, important cases, and all the amendments and enactments which might have happened. So this candidate needs to be updated. Actually, it is not expected that the candidate should have a sound or proficient knowledge of law, but what is expected is that the candidate understands the concepts which are there in the passage, so that they are able to read and understand those topics and concepts. Thereafter, they can analyze those principles as per the situations which are given in the questions and then apply those principles. For this, we will look on one of the passages of the previous year question paper. The passage was related to fundamental rights, the freedom of speech and expression. In the passage, various articles were mentioned. They were actually explained in the passage. So it was not expected that the candidates को उसकी एक sound knowledge होनी चाहिए, या फिर वो सारे articles या फिर उसके provisions को जानते हो, सारा law जो fundamental rights से related है उसको जानते हो, या फिर freedom of speech से related हो उसको जानते हो. But जो जरूरी चीज है जो वो expect करते हैं, that the candidate is actually aware of those concepts of freedom of speech and expression, fundamental rights, constitution. What are these? These concepts they should be clear of, so that this will help them to easily understand the principles, then apply it to the factual situations and answer the questions accordingly. So in order to prepare for the exam, we need to follow the 3P rule.
These three P rules are prioritize, prepare and persistence. So जब हमें सब्जेक्ट मैटर टॉपिक पता है एग्जाम के लिए, सो हमें उसे प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिपेयर करना है. हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एक परसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए, सो दैट वी आर गोइंग टू अचीव अ गुड कमांड ऑन द रीडिंग स्किल, legal issues and magazines, and all these will help us to attempt the mock test. और ये मॉक टेस्ट हमें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस देगा हमारे एग्जाम के पहले अबाउट हाउ टू गो अबाउट दीज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. सो फ्रेंड्स, ixamBee आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोर्स. इस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको 150 प्लस वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं, 50 प्लस स्टडी नोट्स, 120 प्लस डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट, section tests are there, and most importantly 5 full and practice tests are there, so that आप एग्जाम के पहले अच्छी प्रैक्टिस कर सके इस प्रैक्टिस टेस्ट से, मॉक टेस्ट से. इसके अलावा हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एवरी वीक. इन लाइव क्लासेस में आपको एक्सपर्ट लीगल फैकल्टी आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं. ये जो भी ऑनलाइन कोर्स है ixamBee का, वो लेटेस्ट पैटर्न जो क्लैट ने प्रिस्क्राइब किया है उस पे बेस्ड है. एंड लास्टली, ixamBee expert legal faculties will guide you on how to attempt the new pattern, the strategy as well as the study plan for the same. So, अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले नंबर पे. कॉल, व्हाट्सएप और एसएमएस भी आप कर सकते हैं हमें. सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स एंड कोर्सेज. थैंक यू.